Assalamu alaikum and very good evening to all of you. You are watching your Shahid Sar's channel, Shahid Sar's physics class. So जैसा कि आप सब जानते हैं बेटा कि पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किया जिसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा, लाइट, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स, रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा, and we also studied the refraction through the lenses. Are you getting my point? Power of lenses. ठीक है? So by this we have completed this chapter. And now my dear, the second part, the second chapter from your textbook is I and a Colorful World. तो उसमें हमने पहला ही क्वेश्चन क्या पढ़ना है, that is structure of ह्यूमन आई. राइट माय डियर. तो ह्यूमन आई की अगर हम बात करेंगे, अल्लाह पाक ने हमें दो आंखें दी है. इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज टू आईज वी कैन सी द ब्यूटिफुल वर्ल्ड. We can see the beautiful world, and we must be thankful to our Almighty Allah that we are being blessed with this blessing. Isn't it, my dear? तो आप वो उन पर्सनैलिटीज़ को देखो जिनके पास ये दोनों आंखें नहीं हैं, विजुअली इम्पेयर्ड. राइट माय डियर, दे कैनॉट सी द डिफरेंट थिंग्स अराउंड द वर्ल्ड, दे कैनॉट सी दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड, एंड वी मस्ट बी थैंकफुल टू आवर ऑलमाइटी अल्लाह बिकॉज वी आर बीइंग ब्लेस्ड विद दिस ग्रेट ब्लेसिंग. दैट्स अ पेयर ऑफ आई. ठीक है, तो ये पेयर ऑफ आई, अगर आप अब एक क्वेश्चन है, why we have to study this eye in physics? The question is very simple. Our eye exactly works on the principle of the light. Eye is a natural optical instrument. It's an optical instrument, but that is natural. It works on the principle of light, that is refraction. That is refraction. So when light enters into our eyes, there occurs many refractions. बाद में पढ़ेंगे कैसे. तो this is the reason why you have to study the structure of the eye so that you can understand the phenomena that undergoes inside our eye. Right, my dear? This is very interesting and very simple. You can easily remember that. So before we will discuss one more point that I would like to add here. In this chapter, what we have to exactly study? We have to study the structure of eye, and there are some important points that are related with the eye. For example, what is the range of vision, what is the persistence of the eye, what is the far point of the eye, what is the near point of the eye, how many refractions do occur inside our eye. Is it clear? One part. Second part, what are the defects of the eye? Before the defects, we have to understand the normal functioning of the eye, how the eye functions normally. And suppose there are defects. What type of defects are there? There are some biological defects, there are some light based defects, they are called refractive defects. Are you getting my point? This is very simple to understand. Later on we will study this. And plus one more thing, how these defects can be, how these defects can be corrected, how these defects can be corrected. ठीक है. And plus we have atmospheric refraction. What are the different applications of atmospheric refraction? For example, why stars twinkle and why don't planets do not twinkle? This is the question. Why sun rises early and why sun sets late? These are the. Why clouds are white in color and why the color of the sky is blue? So these are the concepts. And what is the scattering of light? What is the Lord Rayleigh's law of scattering? So these points I'm going to discuss with you, and this is going to be very, very interesting, my dear, and you enjoy. Inshallah, you will enjoy when you stay with your Shahid sir. Thank you, beta. So coming to our
topic today. What is the topic today? It is the structure of human eye. Already told you, the human eye is a very, very, very good natural instrument that is fitted inside the sockets, eye sockets. ठीक है बेटा, eye sockets में इसको fit किया गया. Since they are very delicate, eyes are very delicate and they are protected by these, sockets. And these sockets are actually made up of the bones. And these bones actually protect our eyes. So that is why they are placed in what? In the cavities that are called as what? Yeah, they're called cavities. Okay, my dear. There are two eyes. That's a one pair. And eye is a natural instrument. But better to say optical instrument. Optical instruments are many. Some are artificial, some are natural. And they work on the principle of the light. Okay, so no need to discuss. It is understood to you. So coming to the point now. If you have to study about the eye is spherical in shape. It has a diameter of 2.3 centimeter. ये चीज़ें तो आप आराम से book में पढ़ सकते हो. Right, my dear? So what is the focus of today's topic is you have to understand the basic parts. आपको कुछ basic parts of the eye पढ़ने हैं. I'm not going in detail. हमें यहाँ पे physiology of the eye नहीं पढ़नी है. हमें यहाँ पे anatomy of the eye नहीं पढ़नी है. Dissect the eye and what are the different parts of the eye. No. यहाँ पे हमें eye को इस तरह से पढ़ना है जो हमें मदद देगा refraction को understand करने में. So we are not going in detail, we are not going in depth. No, my dear. So you can see clearly. पहले आप देखो, there is the white of eye, right? And then there is a black part of the eye, and inside that black part there is a hole. So white of the eye and black part of the eye. Just to see, अगर आप किसी की आंख में देखोगे तो you will see, या अपनी आंखों में मिरर में देखो, you have a white of the eye here, white of the eye. Then inside the bulged portion, the protruded portion, the bulged portion like this, bulged portion. And this bulged portion is called as cornea. Please remember, the bulged portion is called cornea. And जो ये white of the eye है, white of the eye, ये ऊपरी हिस्सा, that is called sclerotic. It is actually a layer. Basically, in our eye, there are three layers. The outer is called white layer, that is called sclerota. And the inner layer, the middle layer, it is called as choroid. And choroid is basically the pigment layer, right? And the third one is, my dear, the very beautiful and the very important, that is retina. Or retina is actually basically the screen of the eye on which the image is formed. The functional unit of the eye, please remember, can be asked as an objective type question, 1 mark question for you. Okay, coming to the point. The bulged portion, you can see the bulged portion. What is that called? Sir, it is called cornea. Inside the cornea, you can see a muscle-like structure like this. It is generally colored. तो किसी की आंखों का रंग काला होता है, किसी का ब्राउन होता है ना, बिल ٲسۍ आसान या krehni ٲسۍ आसान, isn't it? तो ये कम से डिटरमाइन गसन, ये गसन एम आइरिस से डिटरमाइन. तो कॉर्निया के बाद आपका दूसरा पार्ट है बेटा, दैट इज आइरिस. ओके, और आइरिस के बाद आप देखो यहाँ पे एक होल है, आइरिस के बीचों बीच एक होल है जहां से लाइट एंटर होती है, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल. PUPIL, प्यूपिल. तो बल्जेड पोर्शन, दैट्स कॉल्ड कॉर्निया. कॉर्निया के बाद एक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड आइरिस. तो आइरिस जो ब्लैक ऑफ द आई है, दो लेंस, ब्लैक पार्ट ऑफ द आई, इट इज पिगमेंटेड, इट इज कलर्ड. तो इसी से पता चलता है किसी की आंखें मतलब ब्लैक होती है, किसी की आंखें ब्राउन होती है, तो ये इसी से पता चलता है. तो आइरिस के बीच में एक होल है जहां से लाइट एंटर हो जाती है. व्हाट इज दैट कॉल्ड? प्यूपिल. What is that called? Pupil. Basically, amount of light is controlled by this iris. ये भी एक important function है इसकी. ठीक है? Okay. So after that you can see we have a double convex lens. It is called beta crystalline convex lens. We have a convex lens. So property of eye क्या है? Converging. ये already हमने discuss किया. Convex lens has the property of convergence.
कॉन्वेक्स लेंस हैज द प्रॉपर्टी ऑफ जो रेज ऑफ लाइट पर लाएगी ना, ये रेज को कन्वर्ज एक ही पॉइंट पे करेगी. ओके, नाउ आफ्टर दैट आपको दिखाई दे रहा है कि कॉर्निया से लेकर लेंस तक देयर इज ए फ्लूइड माय डियर, देयर इज ए फ्लूइड एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज एक्वस ह्यूमर. इट इज कॉल्ड व्हाट? एक्वस ह्यूमर. देखो बेटा, कभी कभी कचरा या धूल आपकी आंखों में चली जाती है, तो आप क्या करते हो, ऐसे ऐसे रब करते हो तो एक एक सब पानी जैसा निकलता है. वो आंसू नहीं होते हैं. दैट इज आंसू जो है, दैट इज द फंक्शन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड. सो लैक्रिमल ग्लैंड की सिक्रीशन होती है टीयर्स. बट ये जो एक्वस ह्यूमर है, इट इज द फ्लूइड दैट इज बेसिकली प्रेजेंट इन बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, कॉर्निया एंड व्हाट, लेंस. तो इसका जो फंक्शन है ना, इट प्रोटेक्ट्स आई फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स. अगर डस्ट चली जाती है, कोई ऐसा चीज चला जाता है जो आंखों को तकलीफ देता है, तो ये पानी की वजह से अब ये बाहर आ जाएगा. तो दैट इज एक्वस ह्यूमर. राइट माय डियर, यहां तक क्लियर है. अब आप देख सकते हैं लेंस से लेकर मैक्सिमम पार्ट ऑफ द आई, ये पार्ट ऑफ द आई, इसमें और एक फ्लूइड है. इस फ्लूइड की वजह से बेटा साइज ऑफ द आई बॉल इज मेंटेन्ड. इट गिव्स द प्रॉपर शेप ऑफ द आई. अगर आप बलून में आप एयर भरते हो तो इट टेक्स स्फेरिकल शेप. राइट, इट डिपेंड्स कि बलून का स्ट्रक्चर कैसे होगा. व्हेन यू आर गोइंग फिलिंग द एयर तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा. वंस यू एक्सपेल एयर आउट ऑफ इट, आप एक्सपेल एयर को निकालोगे, बलून से एयर को निकालोगे, तो व्हाट विल बी द शेप? इट विल श्रिंक. सेम इज द केस बेटा, यहां पे और एक फ्लूइड है, लेकिन व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द फ्लूइड, ये मसला है. को लेंस से लेकर ये वाला रेटिना, द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन लेंस एंड द रेटिना, दैट इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर. it maintains the ocular pressure of the eye, यानी प्रेशर ऑफ द आंख का जो प्रेशर होता है ना, वो मेंटेन रहता है विट्रस ह्यूमर से, एंड इट गिव्स द प्रॉपर शेप टू द आई. ये फंक्शन है विट्रस ह्यूमर का. आफ्टर दैट यू कैन सी देयर इज व्हाट वी कॉल्ड एज रेटिना. रेटिना. तो इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज जब बनेगी ना, वो इसी रेटिना पे बनती है बेटा, ये याद रखना, रेटिना पे. और आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन, ये वाला पॉइंट, एक स्पॉट है जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट. वहां पे लाइट नहीं पड़ती है और वहां से एक नर्व निकलती है जो ब्रेन के साथ टच होती है. दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व इज द नर्व जो कहां से चली जाती है, जो आंख से चली जाती है. तो कहां से, व्हाट इज द एंट्रेंस ऑफ द ऑप्टिक आई? इट इज ब्लाइंड स्पॉट. रेटिना पे और एक स्पॉट होता है, दैट इज कॉल्ड येलो स्पॉट. द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई इज येलो स्पॉट, क्योंकि उसमें कल हम इंशाल्लाह उसके बारे में पढ़ेंगे, व्हाई इट इज कॉल्ड सेंसिटिव पार्ट एंड व्हाट ब्लाइंड स्पॉट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट. ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे. सो दिस वाज एक्चुअली द structure of the human eye. Inshallah, today's video is very short. Okay, tomorrow inshallah we are going to discuss about the functions of the eye and some important terms related with the eye, and we will also discuss some some defects of the vision. So I hope you have enjoyed this lecture. If you really so, like it, share it, and do subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get my latest notifications, right my dears, latest videos as well. Thank you. May Allah bless you and stay blessed, and always keep learning. Bye.